Pramila madam, are you there? Pramila ma'am is there, but her mic is muted. She is not speaking, I think. No? She might be busy. Yes, madam, you can start the session, ma'am. Okay, fine. Yes. Sir, please start recording. Okay. Yeah, I've done it, ma'am. आप मुझे बता देना ma'am when I have to start. I'll do that. Please start. Please अच्छा, start. can I start, ma'am? Please start. Good morning, one and all. Thanks, Pramila madam, for giving me opportunity to introduce our today's guest speaker, Lieutenant Colonel Ganesh Babu sir. On behalf of GSPM, Rajarshi Shahu College of Engineering, I, Meenakshi Duggal, welcome today's guest speaker, Lieutenant Colonel Ganesh Babu sir. Sir is a director for the Academy of Life Skills Development. Regarding the qualifications wise, sir is BSc graduate, BTech in ENTC stream, gold medalist in MA, MBA in self-management and crisis management. Sir is a DRDO trained personality trainer as well as assessor. Sir has served in the army for more than 30 years. After taking VRS, he has started his own training and consultancy services by the name Academy for Life Skills Development at Pune, and he is conducting various programs on regular basis that is called self-management leadership. Sir is conducting programs on various topics on regular basis. For example, make mind your best friend, student-teacher relationship, value-based living, managing examination stress, the power of inner silence relationship through medical, etc. Sir is also a guest speaker for the Brahma Kumaris organization at Mount Abu in Rajasthan. I request Lieutenant Colonel Sir to share his experience. Thank you very much, sir, for a very short duration. Thank you. Thank you, Meenakshi ma'am, to all faculties who are present here and all the students who have joined, for this MBA program. And I'm sure you will be able to achieve your aim and the aspiration with which you have come here. And this induction program is an online program. Last time also, I remember we had this online program where I was, invited and I gave a speech. I don't know what was the topic that time, but we had a good response. Meenakshi ma'am ne wo video bhi share kiya tha. I think it was self-awareness, key to success karke. That was a module. So to all the students who have taken admission for this MBA program, congratulations, and I hope you have a bright future. We have little uncertain timing because of this corona, but I'm sure that's all a short term thing, and in the long term we all should be able to get over that work. So first of all, I welcome all of you who are the new students here, and thank you to the faculty and the teaching staff who are there. Now, I was going through the website of your college. So the vision that was given there was to create a full-fledged management professionals through excellent academic environment. So that is very nice. And second, the mission of the college is to empower students with core competencies of management and equip them with professional skills for entrepreneurial and socio-economic development. Now, I'm sure I've also done management. All these faculties, they will be doing it to the best of their capability. But as students, before you to get associate with this vision and this mission, we have to understand one thing, that this vision and mission cannot be achieved only by the college. It is a two-way process, and the biggest stakeholder is the student, because the college exists because the students exist, and all this vision mission is for the students to achieve it. And we have to understand that as a student, as a whoever, we live in two worlds. One is our inner world, second is our outer world. Our inner world is not visible through our naked eyes, and our outer world, we can perceive it through our five sense perception, that is aankh, kaan, naak, tongue, skin. So we know what's happening in the world outside us, but very little we know what's happening within us.
And what I would like to say is, if we are in conflict in our inner world, अगर हम अपने अंदर की दुनिया में conflict में रहेंगे, that conflicts get manifested in the world outside, be it in our profession, be it in our studies, be it in our relationship. Similarly, if we are in harmony in our inner world, we will be in harmony in our outer world. So what is more important is not what happens outside us. What happens outside us, it is called paristhiti. But what is more important is what is happening within us, which is manasthiti. So to handle any situation in life or in profession or in academic, there are two things: the external situation and your internal response to that. Paristhiti versus manasthiti. Corona is an external situation and we have no control. But the internal situation, even in presence of Corona, should be as per my choice. So the entire emphasis that I'm going to talk today is not on managing the world outside, which anyway your college will be taking care of, because that's what it is designed for, and the faculties are experts in doing that. I will be talking on management of the domain which is not visible. That's the domain within us, what's happening within me. So that's a domain, and I think that's very important, because in your college, in this MBA program, the modern management will teach you to manage 5 M's of the outer world. What are those? Man management, material management, machine management methods, process management, financial management. Take any form of management, you can classify them into these 4 heads. But what I'm trying to say is, you cannot manage these 5 M's of the outer world if we don't know how to manage one more M of our inner world, that is our mind. So if this mind cannot be managed, then all the efforts to manage the world outside becomes meaningless, be it financial management, be it relationship management, or be it health management. So the first step to manage the world outside begins with the managing the world inside. So that's where the concept of self-management leadership, which ma'am mentioned, and I make a statement that if you can manage the world inside us, we can manage the world outside us. Now, आप लोगों को सभी को पता है, in this Corona pandemic, most of us have not contacted with Corona, but the way we got psyched up because of Corona, many of us caught up Corona in our minds, not physically, but in our mind, and it actually affected. The rate of depression, mental disorders, and suicides, conflicts have increased many folds in the face of this Corona. What happened? Corona is on the world outside, but the world inside got in a state of panic, and we got Corona in our minds, not physically, which is as bad as getting Corona in actual. So once again, if you can manage the world inside us, then we can manage the world outside us. Now, I chose this program for the induction program. I'm told that I'm the first speaker. So I thought that as MBA students, before you learn the skills to manage the world outside, I will put you through this module so that we also understand the same time that we have a domain which is within us that also needs to be handled or managed, because only then we can manage the world outside. So that's the concept of self-management leadership, which ma'am talks about, mentioned, and I conduct these classes on that. So self-management leadership. So what management you're going to learn in your college will be the management of the world outside. Here we will talk something about managing the world inside. Incidentally, I conduct this program for training Army, Navy, Air Force mein officers cadre ka, for boys and girls who are wanting to join the armed forces. We have a selection system which is based on personality, and so I impart this training on the concept of self-management leadership, because as a military leader, you also have to manage certain resources, material, weapon, blah, blah, in an extremely trying circumstances, stressful circumstances where life and death is at stake. In that sense, wahan pe, if you cannot manage your own inner senses, it is difficult to lead others. A best example is Wing Commander Abhinandan. When his fighter aircraft fell inside Pakistan, you can imagine the amount of stress that he must have gone through and the kind of resilience that he showed. When we had that, Pakistan issued that video clipping where he says, "Sorry, Major, I'm not supposed to tell you." That was extreme resilience under a life-threatening situation. So we have that kind of a demands
from the armed forces leadership. So I train the boys and girls for the military leadership on the concept of self-management leadership for the SSB interview, Services Selection Board interview. Those who are interested, you can go to the YouTube and type AFOSOP. This is an abbreviation for Armed Forces Officers Selection Orientation Program. So you can find about 350 plus videos. Even if you're not joining the armed forces, you will learn a lot of things or a lot of life skills that will be relevant for you to manage the world inside you. And definitely once you're able to manage the world inside you, it becomes extremely easy for you to manage the world outside. So that's the whole philosophy. My number is also given here. So today the topic that I chose to address you is law of karma. सुनने के लिए ऐसा लगता है it's like a spiritual topic, but it will not be spiritual. It will be interesting. Law of karma, और इसी को मैनेजमेंट की भाषा में या एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की भाषा में it can be called the law of cause effect relationship. Cause मतलब हिंदी में कारण, और हर कारण का एक प्रभाव होता है. इस रिलेशनशिप को अगर हम समझ में आ जाए तो it becomes easier for us to manage the life, and whether it's profession or whatever. So let's go through this module, law of karma or law of cause effect relationship. Now, if I ask you what is this, आप लोग बोलोगे चींटी है, it's an ant. Yes, it is an ant. Now, when a bird is alive, वो चिड़िया चींटी को खाती है. जब एक पक्षी जिंदा होती है वो चींटी को खाती है, और जब वो पक्षी मर जाती है तो चींटी उसे खाती है. This is life का बड़ा simple सिद्धांत है, give and take. So when a bird is alive, it eats the ant, and when the same bird is dead, the ant eats it. है ना? तो time and circumstances can change any time. Something that is happening very good to you, next moment it can be a complete disaster. So similarly, we know how much we have got affected by the corona incident. So this is an introduction to the cause-effect relationship. We will take it at a different level altogether. To explain, I will take this little picture. You can see there are two people here, person 1 and person 2. The person 1 is kicking person 2. Person 1 is kicking person 2. Now this action will create a complete cycle. Let's understand that. So person 1 kicks person 2. This becomes the cause 1. This becomes the cause 1, and this cause 1 produces an effect 1. And what will be the effect? Person 2 will fall down. When person 2 falls down, his falling down itself will become the subsequent cause. Let's call it cause 2, C2. And this C2 will create another effect, and that effect will be, it will be seen on the person 1. And what will be that? He falls down. So effect 2. So can you see there is a chain going on? So let's understand it once again. Person 1 kicks person 2, that is the cause 1. The effect is person 2 falls down. This effect itself becomes the cause for the subsequent effect, that is cause 2. And the effect is person 1 falls down. Now, when person 1 kicked person 2, person 1 did not want it to fall down. क्या बोला? When person 1 kicked person 2, that is cause 1, he only wanted effect 1, but he got another effect, that is effect 2, which he did not wanted. इसका मतलब क्या है? Every action comes with a consequence. Every action comes with a consequence. So समझदार व्यक्ति वो है जो किसी डिसीजन को लेने से पहले उसको अच्छे से इवैल्यूएट करे और उसके कॉन्सिक्वेंस को समझे, एंड इफ ही फाइंड्स दैट द कॉन्सिक्वेंस दैट इज गोइंग टू गेट इन द लॉन्ग टर्म is not going to be desirable, he should avoid it. So decision making involves two steps. One is to take a decision, and second step is when the consequences of decision comes, you should have the courage to accept it. If you do not have the courage to accept the consequences, you should not do it. Modi ने demonetization किया, it came with a consequence. Balakot किया, consequence. So every action comes with a consequence. So I don't know how many of you understood मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. अगर I don't know whether the mics are on. If somebody can say, have you understood what I'm trying to say? Yes, sir. है ना? So इसको थोड़ा सा और समझाते हैं.
Now this is a very simple model. This is a very simple model. So बहुत समझ में आ रहा है. Let's make it little ifs and buts. Let us take you are sitting here. Let us take you are sitting here, and you are looking in the other side. And when you turned, you only saw this man falling down. You saw this man falling down, but you did not saw this man kicking. That means हमने क्या देखा? इस बंदे को गिरते हुए देखा, effect one देखा, लेकिन हमने उसका cause नहीं देखा. तो our information about that incident is partial. Let us take, you are looking that side. When you looked, this man had fall, ये cause to create हो गया, and this man also fall. You don't know, you did not see this man falling. You did not see person one kicking person two. You only saw person two falling. Person one falling. So we will have partial information. What does it mean? Ki we can only see certain effects, but we may not find all the causes behind that effect which is creating it. So we have partial information, and we make judgments कि ऐसे हुआ होगा वैसे होगा without understanding what is leading to that effect. समझ में आया तो जरा yes no में बोलना. Yes, sir. Yes, sir. Let me Yes, sir. let me give you Yes, an sir. example from Yes, life. sir. Let us take you have done your 10th, you have done your 12th, you have done your graduation. Now 10th में some of you would have made a goal कि I want 95%. Some of you would have got it, some of you would not have got it. That means क्या है कि you have created an aim, you achieved it. That means you got the effect, and you got it because you created the right effect, the right cause. Some of you wanted an effect 95 चाहिए but got 63. That means you could not achieve that effect. Reason is you did not create that cause. So if you don't take care of the cause, the effect may not be the one that you deserve or desire. कितनों को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा, sir. I'm a marriage counselor. And I see beautiful relationship going on a tangent because people are only looking at the symptoms, not able to identify the cause behind it. So, आप जब management पढ़ोगे, one of the concept you will be learning is root cause analysis. So, when you do that module, this cause effect relationship will be extremely useful to you, because root cause analysis, it empowers you to identify the multiple layers of causes that is creating a particular effect. What is visible is the effect. What is not visible is the cause. And you as a manager or as a leader must have the capacity to identify the cause which is creating the effect. Effect can be seen by anybody. A leader or a manager is that person who can see what is not seen. Your ability to see beyond what is not visible. That is where your management skills and that is where your leadership skills come. कितनों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो yes बोलो. Yes, sir. Yes. I hope Yes, this sir. topic. Yes, sir. Yes, sir. तो I hope it will make sense to you. थोड़ी देर में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा. So let's understand this. इसी मॉडल को थोड़ा सा आगे हम डिफाइन करते हैं. So let's come to the topic, to the law of karma, the law of cause and effect relationship. Now, before we go further, I want all of you to imagine in your mind one problem that you're facing in your life. It can be academic, it can be personal life, it can be professional life, it can be a situation in Corona के केस में, health situation, और आपकी पिंकी आपसे नाराज है. Take whatever. If you're a married couple, take your relationship with your husband, wife, where some problem is affecting you. With that as a backdrop, let's see and keep this picture in mind. So I will read it. ध्यान से सुनना. Every cause will have an effect. Every cause will have an effect, and every effect becomes the cause for this subsequent effect. है ना? So I've given those C1, C2 and all those things so that you can relate with this picture. So pictorially, if this is the cause, this cause in the future, this cause is getting created now, present, but in the future, this will have an effect. And if the cause is desirable, most probably the effect also will be desirable. And if the cause is undesirable, most likely the effect also will be undesirable. For example, let us take
your relationship with your parents. मान लो ये मम्मी है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये आप हो, and your relationship with your mummy papa is not as good as you wanted it. That means it is an effect, and this effect is undesirable. Now I am worried about यार मेरा relationship खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है. You know what's happening? I am only seeing the effect. I am not able to go back and identify the cause which is creating it. कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? मुझे थोड़ा बताओ. है ना? Got it, sir. Sir, got it, sir. So, for example, let us take you after 2 years, you will become a graduate, management graduate, and you want to go into a placement, and you have an expression of problem, communication skill ka problem hai. Your communication skill is a problem. Your public speaking skill is a problem. Your presentation skill is a problem. Is it a desirable effect or undesirable effect? Undesirable. It is Undesirable. Now Undesirable. I'm talking about 2 years after by then you are an MBA graduate. इसका मतलब अगर उस टाइम में your public speaking skill is weak, your presentation skill is weak, your selling skills or marketing skills are weak, your entrepreneur skills are weak, इसका मतलब है क्या आज वो strong है? No, sir. आज No, नहीं. sir. इसका मतलब वो weakness वो आज भी है. Yes. और इसका मतलब है today itself they are undesirable weaknesses. That means by the end of your 2 years, you should convert those undesirable weakness into desirable strength. कितनों को समझ में आ रहा है? Got it. Yes, So sir. अगर if today you have a public speaking problem, if you have a, I don't know management के students में आपके क्या क्या problem है, I'm sure your organization will tell you. If today you have a problem, that means today you have an effect which is undesirable. That means in the past, in your college, in your school, in your primary days, that was not addressed. लेकिन सबसे बड़ा problem है कि after 2 years MBA, you still continue to have that problem. Your public speaking is not there. Your interpersonal skills are not there. Your management skills have not developed. That means in this 2 years, you have continued with that weakness that becomes undesirable cause. And at the end of 2 years, again, you have that undesirable effect because you have not worked on the cause. Now you want campus placement. You say, यार मेरा campus placement ही नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? मेरा power expression कमजोर है. मेरा ये कमजोर है. मेरा वो कमजोर है. That simply means that you knew there is an effect that is undesirable. And over these 2 years, you simply got a graduate degree, but you did not improve yourself as a person. How many of you understood? Got it, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Can somebody say 2 lines to what I'm trying to say? कोई बोलना चाहेगा? कोई भी अपना माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो. Can somebody explain me मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो. Anyone? Nikhil Shimpi. या अश्विनी. वीडियो ऑन करो. I want some of to put a video. बताओ क्या समझ में आया. It should not become one-sided. या बोलो भाई. One of the skills that you have to take is initiative. Initiative मतलब. Hello, sir. Yeah, please, Satyam. Very good. पहले तो सत्यम के लिए clap for initiative. Okay, Yeah. you were trying to say that if the cause is desirable, then the effect will be desirable. Correct. And if the cause is undesirable, the effect will be undesirable. Undesirable. Correct ना. तो मैं आज बोल रहा हूँ आज की डेट में. Today 16 February. Yes. Yeah. तो I want you to list. I'm making you do something जो कि आपके मैनेजमेंट में कराएंगे. SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities and threat. So आज की डेट में you should know as a young management student what are today your strength and what are your weaknesses. Yes. If you don't have a clear understanding of this, तो हम गांधार है. You know who is गांधार है? आंख होते हुए भी अंधा. And then if you are a smart management graduate, by the end of 2 years, all the weakness that you have, you should have eliminated them and all of them should have become a strength. Only then you will improve your probability of achieving greater heights. कितनों को समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Got it. ना तो दोबारा एक बार इसको दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं.
every cause will have an effect. So if today there is a weakness in you, you have to go back and identify what is causing that. So if you have a conflict with your parents, please go back and identify what went wrong. This tendency, this ability from the effect going back to the cause is called critical thinking in management. किसी भी इफेक्ट को देखकर पीछे जाके कॉज को आइडेंटिफाई करने की जो क्षमता है, दिस क्षमता इज कॉल्ड critical thinking. And then every effect become the cause for the subsequent effect. So इसमें दो पार्ट है. One is every cause will have an effect, and second part is every effect become the cause for the bolo re subsequent effect. So this is 16th February, this is till 15th February, till, and this is ahead of 16th February, मतलब 20th February onwards till जो भी हो. So ये जो definition है दो पार्ट में है. पहला है past से present तक, second is present से future तक. कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. So अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों को एक छोटा सा बात बोल रहा हूं कि आज की डेट में आपके जो स्ट्रेंथ है, they should become more stronger here by the time you finish your two years of MBA. And आज की डेट में जो तुम्हारे weaknesses है, whatever be the weakness, they should not be continuing here. They should have eliminated so that your desirable effects become more and more. कितना को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर समझ में आ रहा है, Yes, sir. आज Yes, देखो, sir. today all of us are sitting here and having this online class, correct? Yes, sir. This Yes, sir. online class itself is an effect. What is the effect? कि हमारा कोरोना के कारण है. What is the cause? Cause is if we have offline classes, we'll have problem of spreading and all those things. What caused it? Because it is a highly kind of. What caused it? घूम के आप चाइना के वुहान में पहुंच जाओगे. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. This ability to go backward, this ability to go back from the present effect, this is what is referred to as Critical thinking. and this capacity is required to identify the root cause to any problem, which is a leadership requirement, which is a management requirement. तो आपके सामने problem कौन सा होगा? ये वाला होगा. This is the today's present level problem, and as a manager, as a leader, your job is to identify the cause which is creating it, that is going backward, and solve it for the future. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Got it. Got it, sir. Yes, sir. You can take your relationship problem, you can take your girlfriend, boyfriend problem, mummy, papa problem, your health problem, your education problem, any problem. Put your present status here and go backward. And अगर आप 5 layer तक नीचे चला गए, कितने layer तक? 5 layers. You can go to by and large to the root. So जब ये management का class होगा आपका root cause analysis, तो आप इसको ध्यान में रखोगे. There are various fishbone method, पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे. But if you have this tool with you, you can do that. Not only you can do it for the purpose of profession, you can do it in your own life. कितना समझ में आ रहा है? Got it, sir. दूसरा इसका एक और advantage है कि if you know this is the cause, you can also see इसका likely effect future में क्या आएगा. क्या बोला? गौरी गोडके, क्या बोला मैंने? अगर this is the thing that I'm creating today, आज मैं ये बीज बोऊंगा तो फ्यूचर में मुझे फल कैसा मिलेगा ये भी पता चल सकता है. क्या बोला मैंने? ईशा बंसल, अरे कोई तो बोलो. MBA स्टूडेंट्स, where is the initiative? दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं सेब का बीज बोता हूं, एप्पल का सीड, तो फ्यूचर में मुझे क्या इफेक्ट मिलेगा? Apple. Fruits. लेकिन if I don't take care of the seed, if I put simply something, कीकर का पेड़, will I get apple? No, sir. अगर लड़के हो तो तुम लोग को एक चीज और समझ में आ जाएगा. Unless you sow, you cannot reap. Can somebody explain? अरे बोलो रे. 1+ किरण, तृप्ति, विद्या. Sir, my name is Harshada. हाँ बोलो. Sir,
if we plant good amount of seed, then it going to be better amount in future. या मतलब अगर विद्या plant आपको will be better. आपको आपको 10 साल के बाद मैंगो चाहिए तो आज क्या करना पड़ेगा? आम की गुठली, आज आपको गुठली, वो भी ऐसी गुठली जो आप चाहते हो. दशहरी आम चाहिए तो दशहरी गुठली. Yes. The problem today's generation is doing is we are looking for shortcut. What are we looking for? shortcuts. We are not going through this process and we suddenly want a desirable effect. इसका मतलब क्या है? We have a faulty thinking. What is the faulty thinking? कि we will not sow the seed, but we want to reap the Fruit. This will not happen. You will not get a good relationship if you don't invest yourself into that. You will not get a good placement if you don't invest yourself today. You may get a degree, but you will not become a professional if you don't invest today. So your communication skill on the day of campus placement will not improve if you don't sow the seeds today. कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका JSPM का faculty, JSPM का campus, everything is very good. But if you don't have the mindset to use the best use of that, the effect will not be desirable. कितना समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, somebody read it. Vidya, read karo. I will make you speak for me. Vidya, read karo re. Critical thinking का definition. Yes, sir. Critical thinking, it is the ability to carefully observing, gathering, analyzing, processing, and making sense of information. So if you want to become an effective leader, effective manager, you should have a skill which others don't have. What is that? देखो, what is obvious everybody can see. क्या बोला? What is? Obvious. But you can only become an effective leader or a manager if you have the capability to observe what is not so obvious. मतलब वो चीज को देखने की काबिलियत जो दूसरों को नहीं दिख रहा लेकिन आप देख सकते हो. किसको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. उसके लिए मैं इसे अपने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में आई कॉल इट सर्प दृष्टि. सांप कैसे घूमता है जंगल में, रेंगता रहता है ना? तो इट कैन सी डिटेल्स ऑफ एवरी ग्रास. So it is your ability to carefully observe. What is the difference between seeing and observing? Can somebody tell me? Shubham, what do you mean by seeing a thing and observing a thing? Seeing a thing is just to look Yeah, towards, and observing is to observe what is happening. absolutely. Seeing is mechanical. Seeing is Mechanical. mechanical. आंख है तो दिखेगा भैया. लेकिन seeing is not observing. Observing is a cognitive, is a mental process. यहाँ पे आपका mental faculties, your intelligence comes into play. So if you want to become a good manager, good leader, a good friend, good husband, good wife, good professional, you must not stop seeing, you must start observing. Observe. And observing involves your perception. Perception matlab, how do you make sense of the information presented to you? As a manager, if some data comes to you, this data is not a raw data to you. Out of that raw data, you should be able to gather, analyze, and process and make sense of the information. That makes you a leader. That makes you a manager. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. वरना पढ़ तो सब लेंगे. Everybody can read it, but not everybody can critically analyze it. I don't know कितना समझ में आ रहा है. Yes, sir. घर में कितने भौंक रहे भाई? पता नहीं. So this thinking is critical thinking. Let me give you a military example. Let us take when you go for surgical strike inside Pakistan, you cross the IB. Would you like to observe around you or just simply look around you and enjoy the beauty? Observe around. You cannot enjoy the beauty. If you enjoy the beauty, that will be your last day. Yes, sir. So similarly, as a leader, if you don't observe, that will be the end of your growth. How many of you understood this? Got it, sir. आगे Yes, चलें? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have seen. Sapna Agrawal, read it once again before we go into the next slide. Padho. Sapna Agrawal. Yes, sir. The Padho. law of karma. Every cause will have an effect, and every effect becomes the cause for the subsequent effect. Right. So Sapna, can you identify
from your own life where you are experiencing some effect which you're not happy about. You feel bad about it. But can you see उसके पीछे एक कारण है जो कि तुमने नहीं देखा लेकिन अब देख सकते हो कि मम्मी तुमसे चिढ़ती क्यों है? क्योंकि तुम साला 10 साढ़े 10 बजे तक उठता ही नहीं है, बेड पे सोती रहती, मम्मी को हेल्प नहीं करती, तो मम्मी क्या हो रही, चिढ़ रही है. मम्मी का चिढ़ना इज व्हाट? इट इज एन Effect. इफेक्ट. उसके कारण क्या है? तेरा साला 12 बजे तक उल्टा होता है. And now because this is the effect, this becomes the cause of the subsequent effect. अब मम्मी को पापा के पीछे तेरी चुगली मारती रहती है. तेरे को पिकनिक जाना था, मम्मी ने पीछे से उंगल मार दे, बोला इसको मत भेजना. अब तो हम लोगों को क्या दिखता है आसानी से? इफेक्ट दिखता है. क्या नहीं दिखता है? Cause. रहते हैं जीवन में. हम क्या देख के परेशान होते हैं? Effect देखे. मैं ओवरवेट हो गया. मैं क्या बन गया? ओवरवेट हो गया दिखता है. साला 6 बर्गर खाते वो नहीं दिखता. मैं सुबह सुबह 8 परोठा चिपका रहा, बहन का भी 2 परोठा खींच लिया. सोते टाइम एक आइसक्रीम, रात को बाथरूम गए आते टाइम एक आइसक्रीम. ये क्या हो रहा है? फिर बोलते हैं यार मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा. कितना समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Many times the effect, for example, graduation, I expected 80%, I got 63, and I am feeling bad. Arey, don't feel bad for the effect. Go back. तुम साला पिंकी के पीछे घूमता था, गया था कॉलेज, गोल सेटिंग हो गया. ना गोल मिली. किसकी गलती है? हमारी गलती. हमारी क्यों बोल रहे हैं? खुद की गलती. साला अपना सबके ऊपर डाल रहा है तू. I go to various colleges, school colleges. मुझे साला कॉलेज में स्टूडेंट कम्स देवदास और देवदासियां ज्यादा मिलते हैं. शांति के नाम मिलने से अशांत हो रखे. क्या बोला? शांति के नाम मिलने से अशांति मिलती है. शांति. अभी तुम लोग JSPM के मैनेजमेंट कॉलेज में आए हो, यहाँ मैनेजमेंट करने आए हो या साले शांति के चक्कर में आए हो? फिर बोलते हो मैनेजमेंट ऑब्वियस सर. हाँ, तेजस समझ गई. चलो आगे पढ़ो इसको. somebody read it. So if you don't like the effect, change the cause. क्या मतलब है? अगर तुम्हें विद्या को अपनी मम्मी का चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं लगता, पापा को चुगली करती अच्छा नहीं लग रहा, that's an effect. And if you don't like मम्मी का वो effect, what you should do? Change the cause. ये जो 10:30 बजे उठते हो ना, इसकी जगह 6 बजे उठो, 6 से 7:30 बजे मम्मी को हेल्प करो. फिर देखो मम्मी खुद ही बोलेगी, अरे सुनते हो, इसको छोड़ दो, पिकनिक भेजो. हाँ सर. इसको समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes sir. तो आज से 2 साल के बाद रोना नहीं कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला. आज से 2 साल के बाद ये रोना नहीं कि मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है, मेरा मार्केटिंग स्किल्स कमजोर है, मेरा एनालिसिस कमजोर है. दे आर ऑल गोइंग टू बी व्हाट? दे आर ऑल गोइंग टू बी Effect. एंड कॉस्ट कब चेंज करना पड़ेगा? टुडे शुड बी इन योर कंट्रोल. साला कल का तो गारंटी नहीं है. सपना अग्रवाल. हाँ सर. सॉरी सर. If you get up tomorrow morning. मैंने बोला if you get up tomorrow morning. तो सपना बोलेगी सर क्यों मार रहे हो मुझे? कोई गारंटी है कल की? आपको समझ में आ क्या बोलो? There is no guarantee of tomorrow यार. अगले एक घंटे में पता चला का फोटो आ गया. He is no more. There is no and something that has happened in the past any control. बोला रे पास दिन में नहीं कंट्रोल. अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? What has happened in the past we have no control. Yes sir. What is going to happen in the future? It is uncertain because it has not even happened. What is in our control? Today. Present. Today. And Present, yes sir. today what you do is important because what you do today will become the cause for what happens to you in the Future. Future. समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Got it. दोबारा इसको पूरा एक साथ कौन पढ़ेगा? अभिजीत धीरे धीरे पढ़ो पूरा एक बार. इसको दिमाग के ऊपर उतार लो. इंडक्शन प्रोग्राम के पहले दिन ही इसको उतार दो. क्या?
will have an effect, and every effect becomes the cause for the subsequent effect. And the subsequent effect जो भी है, if you don't like the effect, please identify and change the cause. Cause. Yes, sir. अगर आप इसको नहीं करोगे तो आप जीवन में सिर्फ पश्चाताप करते रह जाओगे. पश्चाताप मतलब काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैं पिंकी के पीछे नहीं घूमता, काश मैंने प्रोफेसर की बात मान लिया होता, काश मम्मी की बात मान लिया होता. Because your age will improve, your time will go, your college will go, and once you move from college to campus, you are going there unprepared. Yes, sir. कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. I don't know ये Yes, sir. relevant लग रहा है आप लोगों को? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वाला स्पिरिचुअल क्लास चल रहा है. नहीं, sir. Nice, sir. No, sir. वाजी हो रहे हैं, मैं स्पिरिचुअल No, sir. मुझे. Okay. चलो. Next पढ़ो, this paragraph पढ़ो, last वाला. Transform your thoughts. Transform your thoughts and you will Brand new create a destiny. brand new destiny. So if you want to change the cause का change will start from changing your Thoughts. thoughts. For example, let us see this. Let us say ये आप में से कोई, let us say this is Swapna Agrawal. Swapna Agrawal है ये. She is in the college, MBA college, JSPM में, and she has a thought. कॉलेज में आई मस्ती करूंगी. क्या करूंगी? 2 साल मस्ती करूंगी, सुरेश के साथ घूमूंगी. ये अभी प्रेजेंट थॉट है. Now this present thought तुम बताओ, is it desirable or is it undesirable? Undesirable. Desirable. Undesirable. साल के एंड में desirable outcome आएगा, undesirable आएगा. Undesirable. Undesirable. फ्यूचर में desirable आएगा, undesirable. 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 You don't like the effect, change the cause. इसका मतलब है सपना ने ये मस्ती और सुरेश का चक्कर छोड़ना है और she has to concentrate. Yes. Studies here. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everything she has to आप do. अच्छे से समझ में आया. Yeah, she has to do everything which will act as a desirable cause today so that she gets the desirable effect tomorrow. और एक बार क्या नाम है उसको, सपना को desirable effect मिल गया, she becomes a good professional. साले लड़के सब उसके पीछे भागेंगे. आज उसको भागना पड़ेगा. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Please Yes, sir. understand the Yes, sir. purpose. समझ में आया. Yeah, please understand the purpose for which you join this college. आपको माँ बाप ने पैसे दिए, टाइम दिया, सब कुछ दिया है. सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है. What is the way your mind is operating in this campus? Is it set on the goal setting पे चल रहा है या साला पिंकी setting पे चल रहा है? Goal setting. आर्म फोर्सेस में हमको जो टास्क दिया जाता है, the only thing we see is the task and how to accomplish this task. बीच में डिस्ट्रैक्शन, बीच में पबजी खेल लो, थोड़ा व्हाट्सएप कर लो, थोड़ा पिंकी घूम लो. ऐसा घूमेंगे we can never achieve our complex goals. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This tool you can use it not only for your life or your studies, you can use it for your life. Yes, sir. Let us take an example. Let us take your mummy and papa का relationship is not so good. क्या बोला? मम्मी पापा का relationship is not so good. Good. And this is definitely an undesirable effect. All of you, daughter, all of us as a good son and daughter, we want mummy papa ka relationship should become good. Desirable. But unless we have the ability to go back and identify what is causing it, what is Causing it. we cannot correct it. We cannot correct it. हम understand क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, Yes, sir. sir. So this going backward is the critical thinking, and going forward is called the Creative thinking. तो मेरे को भी Creative thinking. साथ में दोनों को पढ़ो जरा, दोनों साइड को पहले क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ो. दिस इज कहां से? प्रेजेंट इफेक्ट से कहां जा रहे हैं हम? Past effect. पास्ट में. दिस इज पास्ट. पढ़ो इसको. Fast. Critical thinking. It is the ability to carefully observing, gathering, analyzing, processing, and making sense of information. या तो आज बैठ के एक लिस्ट बना लो. In the past, what all mistakes have you done in your 10th, 12th, and graduation, so that you identify the undesirable causes, eliminate them, so that eliminated cause becomes the fresh cause, and that you study in the MBA 2 years,
and you are able to achieve that effect that you want. कितना को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This step in the problem solving skill जब पढ़ोगे, this is called problem identification and defining the problem. क्या बोलते हैं? किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्टली Analyze करना. डिफाइन करना. डिफाइन करना. Unless you understand the problem and define the problem, you cannot solve it. डॉक्टर्स पहले ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं. Diagnosis. Yeah, this is the diagnostic step. एक बार डायग्नोसिस के बाद फिर ट्रीटमेंट आ जाता है. ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए आप सर्प दृष्टि से निकल के किस दृष्टि में जाना है? गरुड़ दृष्टि. गरुड़. What do you mean by गरुड़ दृष्टि? चील कहाँ पे उड़ता है? आसमान में उड़ता है. आसमान में. और चील को क्या दिखता है? सपना पूरा जंगल दिखता है. सांप को क्या दिखता है? You can see it. So as a leader, as a manager, you should have both the vision. You should have a snake's eye view so that you can understand the problem, and you should also have a bird's eye view so that you can create multiple alternatives, and then you can decide किस alternative से आप अपने goal तक पहुंच सकते हो. Who can think of greater options? सांप देख सकता है, चील देख सकता है. ईगल, चील. Greater options. Yeah, but अगर eagle constantly हवा में उड़ता रहेगा, what will he miss? Grass, ground. On the problems, छोटे छोटे प्रॉब्लम. आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कोई बंदा एवरेस्ट से टकरा के गिर गया? No. सभी कहां से टकराते हैं? छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से. और कंकड़ पत्थर ईगल को दिखेगा या सांप को दिखेगा? सांप को दिखेगा. Both the vision, short term vision and long term vision. Long term vision. As a leader, you should have two visions: short term vision, sarvadrishti, and long term vision. In solving a problem, you should have that sarvadrishti to identify to the root of the problem, and then you should have a skill to detach from the problem and become a garud and look at the same problem and realign with the goal and realign with the what are my various options available to handle that problem and reach my goal. कितना समझ में आया? Got it, sir. I want Yes, one sir. of the people to explain क्या समझ में आया. Yes, sir. आज मैं नहीं बोलूंगा, तुम भी बोलोगे. या कौन बोलेगा? गलती करो कोई बात नहीं, जरा बोलो तो. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लेट मी गिव एग्जांपल. लेट अस टेक कि बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़े हो, फर्स्ट फ्लोर में खड़े हो. Yes, sir. तो आपका विजन कहां तक होगा? लिमिटेड विजन. और वो आपका बिल्डिंग 30th फ्लोर का है. नाउ यू टेक द लिफ्ट एंड गो टू द टॉप and stand on the roof. Now again look at the same direction. In which case your vision will expand. ऊपर First floor. ऊपर. तो किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको नीचे आना है बेसमेंट पे, ताकि उस प्रॉब्लम को बारीकी से समझो. लेकिन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम समझने के बाद कहाँ चढ़ना है? ऊपर. और वहां से क्या? ऊपर चढ़ना. वहां से आपको प्रॉब्लम भी दिखाई देगा और आपका क्या दिखाई देगा? Solution. तो कभी मौका मिलेगा तो वी विल कि कैसे इसको एक्चुअल में अप्लाई करना. बट आई वांट समबडी. कौन बोलेगा? मेरे को बोलो जरा समबडी. चलो मैं बोलता हूँ. शुभम. So to solve the ground level problems, you have to do the critical thinking. Not to solve the problem, to understand. Sorry, sir. To understand the ground level problems. To have. And We the have- kind of thinking that you use is what is it called? Critical thinking. ये Critical आपका thinking. मैनेजमेंट में बार बार आएगा. Yes, sir. है ना? You should have critical thinking. They will give you a case study. ऐसे हो गया, बताओ क्या हुआ. तो बोलेंगे give solutions. Creative thinking. Creative thinking is also called out of box thinking. Yeah, somebody else. कौन बोलेगा? प्रतीक्षा. मयूर. कोई भी बोलो. वॉलंटियर. शोराब.
Sir, critical thinking means going to the past and finding the problem, and creative thinking is that after finding the problem, go out of the box thinking and solving the problem in different ways. अभी मैं कुछ terms बोलूंगा, ध्यान से सुनना. This critical thinking is also called hard thinking. What is it called? Hard thinking. Hard thinking. Creative thinking is also called soft thinking. Soft thinking. Somebody tell me why it is called hard thinking. Sir, सर going छोटी to से छोटी बातें देखना पड़ता है. नहीं, not छोटी से छोटी बात है, कुछ और है कारण बताओ. Hard thinking, hard, soft, hard. Past में हो चुका है, hard, soft हुआ. जो हो चुका है और जो होने वाला है. Yes, सपना ने बिल्कुल सही बोला. Hard thinking इसलिए because वो event हो चुका है, the data is real. And soft thinking इसलिए वो हुआ ही नहीं, वो तो future का, वो तो मेरा assumption है. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Creative thinking को imaginative thinking भी बोलते हैं. कौन सा thinking बोलते हैं? Imaginative. Imaginative. तो मैं सोच रहा हूँ होगा. और हार्ड थिंकिंग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इवेंट हो चुका, डेटा अवेलेबल है. यहाँ का डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे प्रिडिक्शन है. प्रिडिक्शन मतलब assumption. मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में होगा. हार्ड थिंकिंग, मैंने मम्मी से ऐसा पंगा लिया, इसलिए मम्मी ने पापा को बोला, पापा ने मुझे धो दिया. वो हुआ है. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, गुड. Can you take one example in your life and you would like to relate it? Somebody volunteer. देखते हैं कौन आता है. MBA के स्टूडेंट्स में इनिशिएटिव कितना है. इनिशिएटिव वन ऑफ द क्वालिटीज भैया लीडर्स में. बोलो. नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, मत बोलो. या ट्राई तो करो. कुछ नहीं है तो अपना 12th का मार्क्स रख लो, ग्रेजुएशन का मार्क्स देख लो. अगर अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, बुरा हुआ तो क्यों हुआ. चलो, नहीं बोलना चाहते तो आगे चलते, आगे बोलेंगे. अच्छा, इधर देखो रवि, मैं पहले इसको, चलो मैं इसको देता हूं. नाउ ऑल ऑफ यू वर बोर्न. यस. So this is birth. Our journey, our life is a journey between two letters, letter B और letter D. कोई है जिसको लगता है सर D मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आप बुढ़ा हुआ, आप पहले जाओगे? No, sir. हम सबकी यात्रा का एंड यही है भैया. Our journey is between two letters, letter B and letter T. And between B and T there is another letter. What is that? T. C. And C is Choices. सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. सुनो रे, हमारे जीवन में क्या बोला? In our life. In our life, at various stages of life, in fact, each day we will face various situations. Situation का spelling क्या होता है? To this situation we have to respond. We have to respond. And response के बीच में हमारे को बीच में क्या करना पड़ता है? We have to exercise our choice. Choices, yes, sir. सुनना. Between the stimulus and the response, we have the freedom of choice. तो आज आप लोग MBA के इंडक्शन प्रोग्राम में हो और आपके सामने 2 साल की यात्रा है MBA में, एंड यू हैव ए फ्रीडम ऑफ चॉइस कि आप इस MBA के 2 साल को क्या करना चाहते हो. अपने ऊपर काम करना चाहते हो और इंप्रूव करना चाहते हो, या पिंकी के पीछे भागना और मोबाइल करते रहना. दैट्स अ चॉइस. Improvement. या सुनो रे, मेरे साथ रिपीट करना. बिटवीन द स्टिमुलस, between the stimulus you have the freedom of choice. You की जगह I बोलो. I have the freedom of choice. I have the freedom of choice. That choice can be desirable. That choice can be undesirable. And whatever you choose, it will have consequence. तो आपने पढ़ाई कैसे किया, दोस्त कैसे, कॉलेज में मस्ती कितना किया, कॉलेज में क्या नहीं किया, जॉब में क्या करोगे, MBA में क्या करोगे, कल को शादी में है ना, पिंकी से शादी कर लिया,
एंड देन पता चला साला वाट ही लग गई, सोचा था चंद्रमुखी सूरजमुखी निकली। ज्वालामुखी निकली, है ना। तो देन बच्चे हुए, पता चला बच्चे हुए, बहुत मजा आना था, लगा दिया। At any stage, you can make if you're a person, you will exercise your choices little more wisely, so that we choose desirably, so that the effects are desirable. कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारा बोल रहा हूँ, between the stimulus and the response, we have the freedom of Choice. freedom of choice को ठीक करना है। Sir, can you repeat? ध्यान से सुनना है। Between the stimulus and the response, we have the freedom of Choice. Choices. हाँ, Okay, इस sir. फ्रीडम ऑफ चॉइस को अगर ठीक करना है तो आपको अपने अंदर 5 कंपोनेंट्स को ठीक करना पड़ेगा। कितने कंपोनेंट्स को? 5. Five components. पहला 5 components. हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। क्या मतलब? Self-confidence. Self-awareness. सेल्फ अवेयरनेस। इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, लीडर का डेफिनेशन है इट इज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स। करेक्ट? Yes, sir. तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो। You cannot influence and inspire others if you cannot influence and inspire yourself. Yeah. कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes. मैं बोलता हूँ कच्ची लकड़ी में आग नहीं लगता। सूखे क्या बोला? कच्ची कच्ची लकड़ी में आग नहीं लगता। जब तक कच्ची लकड़ी हो तो तुम में आग नहीं लगेगा, तो तुम कहाँ दूसरों को इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर करके उनके अंदर आग लगाओगे? Yes, sir. गीले कोयले में आग नहीं लगता। तो पहले तो तुम ये डिसाइड करो तुम साला कच्चा लकड़ी है या एकदम जबरदस्त लकड़ी है। जबरदस्त। If you cannot influence and inspire yourself, how Yes, sir. the hell will you influence and inspire your others? Yes, sir. Yes, sir. If you want to become a leader in the future, you will learn to lead yourself. Yes, sir. And you cannot Yes, sir. learn to lead yourself if you don't know what are your strengths and weaknesses. Weaknesses. Yes, sir. और इसके लिए आपको एक मॉड्यूल वो कराएंगे SWOT एनालिसिस। threats. तो SWOT एनालिसिस किसी ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगा सकते हैं, इंडिविजुअल पे भी लगा सकते हो। तो पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाने से पहले अपने ऊपर लगाओ अपने ऊपर लगाना। या करना पड़ेगा। Sir. ये बोलो रे। Yes, sir. Second is learning from the past experience. क्या बोला? Learning past Learning experience. past experience. क्या मतलब है? Past experience पास्ट से में जो गलती Past किया में है से या वो सीखना है। बिल्कुल सीखना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में गलतियां 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3. पहला टाइप। एरर ऑफ Sorry, sir. इंटेंट। Error of intent. या फिर हेलो एरर ऑफ इंटेंट मतलब क्या है? हेलो या एरर, आई सेड एरर ऑफ इंटेंट। इंटेंट मतलब अरे या एमबीए स्टूडेंट्स बोलो। इच्छा कर अपना हाँ, इंटेंट अपनी काम करने की इच्छा, इंटेंट। इंटेंशन का मतलब होता है मैंने वो गलती जानबूझकर किया, मुझे पता ही गलत है लेकिन मैंने किया। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल सपना को पिकनिक जाना था, पैसे पापा ने 2000 दिए, उसको 5000 चाहिए था, उसने आगे चुपचाप पापा की जेब से टपका लिया। तो ये पापा के पॉकेट से टपकाया, क्या ये गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ? जानबूझ के। क्या है? एरर ऑफ Int. फॉर एग्जाम्पल Intact. हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल आपका जीएसटीएम का जो मेन गेट में जो सिक्योरिटी वाला है उसने आपको थोड़ा डांट के बोल दिया, आपने क्या किया, उसका स्कूटर में अपना साला कंपास घुसेड़ दिया, पंचर कर दिया। तो ये जो पंचर किया ये एरर ऑफ इंटेंट था, एरर ऑफ जजमेंट था? Error of intent. या एरर ऑफ इंटेंट। दूसरा है एरर ऑफ जजमेंट। दूसरी गलती किस टाइप का होता है? Error of Error judgment. of judgment. क्या मतलब है? अरे बोलो रे।
taking the wrong step. हैं? Taking the wrong step. या मतलब मैं ये गलती करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। सर क्या किया? मैं ये गलती करना नहीं चाहता था करना नहीं चाहता था पर हो गया। फॉर एग्जाम्पल तू कॉलेज से आया, भूख लगा तो तूने अपना जूता खोल के रखने के लिए ऐसे टांग से निकाल दिया, वो साला जूता उछलता हुआ गया और पापा के सिर पे पड़ गया और पापा ने तेरे को दिया। अब तूने ये सच्ची में पापा को ऐसे मारने की कोशिश किया था क्या? नो सर। बट नहीं सर, आप चाहते हो गया। थे लेकिन हो गया। सर नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? समझे। अब मेरे को एक बार बताना, कहाँ पे आपको माफ करना आसान है? एरर ऑफ इंटेंट में आपको माफ करना आसान है, एरर ऑफ जजमेंट में? एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आके देखो कि रिश्तों में, स्कूल में, पढ़ाई में, दोस्तों के साथ, ऑफिस में, कॉलेज में तुम एरर ऑफ इंटेंट क्या करते हो और एरर ऑफ जजमेंट क्या करते हो? ज्यादा एरर ऑफ इंटेंट करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोला मैंने? ज्यादा एरर ऑफ इंटेंट की तो हमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमको पता है तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, यस सर। भी करते हो। तुम्हारी पिटाई जरा बढ़िया वाली होगी। यस। सोचो तो जरा पास में देखो, तुम्हारी जो गलतियां हैं, ज्यादातर जो गलतियां वो किस टाइप की? एरर ऑफ इंटेंट वाली है, एरर ऑफ जजमेंट वाली है? सर दोनों सर। दोनों है ना? दोनों। ओके कोई बात नहीं। अगर आपके एरर ऑफ इंटेंट बार बार हो, इसका मतलब वो मिस्टेक नहीं है, अब वो हैबिट है। क्या बोला? अब वो मिस्टेक नहीं, हैबिट है। तीसरा कैटेगरी है रिपीटेटिव मिस्टेक। तीसरा क्या है? रिपीटेटिव मिस्टेक। रेपिटेटिव मिस्टेक। इंटेंट, एरर ऑफ जजमेंट एंड रिपीटेटिव मिस्टेक। रेपिटेटिव मिस्टेक। रिपीटेटिव मिस्टेक ये भी कैटेगरी का हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट वंस ए मिस्टेक इज रिपीटेटेड, इट इज नॉट ए मिस्टेक, इट इज ए हैबिट। तो जरा अपने हैबिट की लिस्ट बना लो। आज की डेट में तुम्हारे अच्छे हैबिट्स क्या है और बुरे हैबिट्स क्या है? कितने बजे उठते हो? कितना फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करते हो? कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या करते हो? हेल्थ के लिए क्या करते हो? घर में माँ बाप को मदद करते हो? छोटे भाई बहन को क्या मदद करते हो? समाज में क्या करते हो? गलत काम करते हो, अच्छे क्या करते हो? एक लिस्ट तो बना लो, पता तो चले तुम कौन हो। कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बोला हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा बोला लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। The aim of learning from the past experience is to avoid repetition. Yes, sir. If you don't avoid the repetition, then I told you it's not a mistake, it's a habit. And if it's a habit, you are responsible for that. Yes, sir. और कल को आप एक मैनेजर बन जाते हो, लीडर बन जाते हो, whether you make a error of judgment, नुकसान कंपनी का वैसे ही होगा। Yes, sir. एरर ऑफ जजमेंट हो गया तो सॉरी बोलना आसान है, एरर ऑफ इंटेंट हो गया तो तुम्हारा पोस्ट भी चला जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes, sir. अभी एक बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। sir. दो वर्ड बोल रहा हूँ। वन इज इंटीग्रिटी, वन इज Integrity. सेकंड इज इंटेलिजेंस, सेकंड इज इंटेलिजेंस, थर्ड इज सोशल इंटेलिजेंस एंड फोर्थ इज एनर्जी। Energy. एनर्जी मतलब तुम कैसे लड़के लड़के हो, बहुत जोश टाइप लड़के हो, एकदम साला वो बोलते हैं ना उरी मूवी में, हाउस द जोश हाई वाला एनर्जी। आपका सोशल स्किल्स बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है? योर इंटरपर्सनल स्किल्स, आपका योर सोशली वेल एडजस्टेड, सबके दोस्त बना लेते हो, अच्छी बात है ना? Yes, sir. Yes, sir. Intelligent, what does it mean? Your critical thinking, creative thinking, conflict resolution skills, they are all very good. इसका मतलब क्या है? Your decision making skills are very good. Your problem solving skills are very good. अच्छी बात है कि नहीं है? Yes, sir. And you are a high integrity person. You are a high integrity person. What does it mean? तुम बहुत ईमानदार हो। Yes. Honesty. तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। Is it a good combination or bad combination? High energy, social skill. Good combination. Very good, yeah. Very good. Intelligence. Now, Sapna, case number 2. You are a high energy boy or a girl. You have excellent social skills. You are very intelligent, but you lack integrity. Bad. You are a dangerous person for the organization. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Very dangerous person for the organization. क्यों? क्योंकि Yes, sir. तुम्हें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना आता है, तुम बहुत हाई एनर्जी बंदे हो, इनिशिएटिव ले सकते हो। तुम्हारे साथ एक ही प्रॉब्लम है, You are not trustable. you are not a trustworthy person. You tell Trustable person.
You tell me tomorrow, if you become everything good, lacking integrity, will you be asset to the organization or a liability to the organization? Liability. Liability, sir. Tomorrow, if one of you become a military leader, high intelligence, high social skill, high energy with lacking integrity, can the nation sleep? No, sir. No, sir. I don't know कितनों को समझ में आया. So error of intent जब हम करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने इंटीग्रिटी को छोड़ देते हैं. कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? Got it, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है. हाँ. गलती तो तुम. Yes, sir. एरर ऑफ जजमेंट हो गया. पापा आई एम सॉरी, मैंने आपको चप्पल मारा नहीं था, गलती से लग गया, आप मुझे गाली दी. हाँ सर. अगली बार से ध्यान रखूंगा. हाँ, तुम तो साला निकाल के मार रहा पापा को यार. फेंक के मारता फिर बोलता पापा गलती हो गया. छोड़ेगा पापा? No, sir. नहीं. वॉशिंग मशीन में डाल के घुमा देंगे तुम्हें. क्या बोला? पहला बोला हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड बोला लर्निंग फ्रॉम पास्ट Experience. थर्ड थिंग इमेजिनेशन. सो पहला था सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड था लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. So this is critical thinking, this is creative thinking. Imagination का मतलब है प्रेजेंट में खड़ा होके अपने डिसीजन के फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को होने से पहले देख पाना इज अ लीडरशिप रिक्वायरमेंट. कितना समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Who has understood this? क्या बोला मैंने, बताओ. ऋचा अवस्थी, योगेश, उद्देश, क्या बोला बताओ. तो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को अभी से देखना. अभी से देखना. कॉलेज का पहला दिन है तुम्हारा, अभी से देख लो कि तुम पिंकी के पीछे घूमोगे, व्हाट्सएप करते रहोगे, कॉलेज बंक करके मूवी देखोगे, तो इसका फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंस क्या आने वाला है. Yes, sir. अगर ये आज ही देख लोगे, देन यू हैव ए चॉइस. करना है तो करो एंड हैव द करेज टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस. So if you take a decision, have the moral courage to accept the responsibility. अगर अच्छा हो जाए, अगर डिसीजन अच्छा हो जाए तो we did it, और अगर डिसीजन गलत हो जाए I am responsible. जब अब्दुल कलाम जी का पहला स्पेस मिशन फेल हुआ, प्रोफेसर सतीश धवन ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला द मिशन फेल्ड एंड आई एम रिस्पांसिबल. और जब अगली बार सक्सेसफुल हुआ तो अब्दुल कलाम जी को आगे कर दिया, जाओ बोलो. That's leadership. Your ability to foresee the consequence of the decision. Yes, sir. And your moral courage to accept it. What courage? Moral courage. All of you have physical courage कि तुम भाग सकते हो, चल सकते हो. Do Yes, you sir. have the moral courage? So if you want to become a big leader, you need to have moral courage to accept the mistakes and correct it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The next component is conscious. Conscious मतलब चेतना की आवाज. शर्मा जी की बेटी चेतना नहीं. The voice within you. Yes, sir. क्या बोला? The voice within us. जब भी तुमने कोई भी गड़बड़ किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आई थी, सपना गलत कर रही है. आता है कि नहीं आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ये आवाज इतना वीक भी नहीं होता, तुम्हें सुनाई नहीं देता, और इतना स्ट्रांग भी नहीं हो सकता कि तुम इसे कुचल नहीं सकते. Yes, sir. इसका मतलब क्या है? एज ए लीडर, if we can recognize and listen to that inner voice, this acts as that GPS within us. It acts as GPS within us. GPS within us. आजकल नहीं होता, सब मोटरसाइकिल कार में हम GPS लगाते हो, अंग्रेज बोलती है टर्न लेफ्ट टर्न राइट. Yes, sir. तो हम अगर एक्सटर्नल नेविगेशन के लिए उस अंग्रेज लड़की की आवाज पे इतना विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर भी तो एक चेतना की आवाज है, उसको भी सुन लो. सो इस कॉलेज में तुम जो अगले 2 साल बिताओगे, प्लीज लिसन टू इस चेतना की आवाज को. बाहर की पिंकी की आवाज तो सुन ही लेना, इस चेतना की आवाज भी सुन लो. ये तुम्हें बताएगी तुम जो कर रहे हो डिजायरेबल कॉज है या Undesirable. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. If you activate the voice of your inner conscious, your decisions के बीच में बहुत बड़ा क्लैरिटी आएगा. Yes, sir. क्योंकि this internal GPS will constantly guide you what is right and what is Wrong. कितना को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. I don't know आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, Yes, sir. समझ में. सब हम अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं. जब आपने देखा होगा विक्रम बत्रा,
Sardarji, captain, young captain of your age, Yes, sir. 24 years old, Yes, young sir. boy, 24 years, he says, ye dil mange more, and he goes that uphill 0.5140 and he kills himself, and in the process takes 5 people, because उसे ये पता है कि अगर मैं जिंदा वहां तक पहुंच गया तो मैं उन्हें मार पाऊंगा, उसके बाद मैं मर गया तो I'll achieve my aim. Can you imagine the amount of supreme sacrifice that Sardarji 24 years का done? Yes, Yes, sir. Commander Abhinandan is going at a max speed with a Salah old MiG-21 Bison. Fraction of second he has to decide, should I go behind that F-16 which is better than me and shoot him and take the risk of entering into POK, or should I take a left turn and come back to India? And he goes behind. Rest is history. Yes, sir. That's extreme decision making. Military leadership तो पागलपना है, अलग ही कुछ पागलपना है. But even in corporate leadership, leader is leader at any level. Your goals are different, but the approach to leadership is same. Whether you are a corporate leader or military leader. तो हमें तो ये पता भैया हमारा लक्ष्य वो है, उस लक्ष्य को पाना है, तो our energy has to be directed. Whether it is Kargil or it is a corporate target. कितना वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. I will request you to listen to Captain Raghuram Rajan. He is a Raghuram ex-security officer. He is today corporate CEO working with Mahindra Group and Reliance के ऊपर. Captain Raghuram Rajan. Raghuram Rajan. I don't know आप लोगों ने सुना. It will help you tremendously. आपका ये JSPM management school जो है, college जो है, it will give you a lot of theoretical framework. But your ability to implement that framework in real life situation is what is going to be the differentiating factor between an average MBA and an outstanding MBA. MBA degree सबको मिल जाएगा 2 साल के बाद. But everybody will not be same in terms of your ability to apply. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. The name I told is Captain Raghuram Rajan. He is a short service commissioned officer who is a CEO in some Mahindra का, and वो पता नहीं कहाँ पे क्या कर रहा है, and is a corporate speaker, very powerful speaker, and he connects armed forces का training with corporate training. Is very beautifully integrated. So it will help you tremendously to align your studies. You have to be focused. जो स्टॉक में आए थे सर कैप्टन रघुराज. कहाँ पे आए थे सौरभ? जो स्टॉक या जो स्टॉक में टेक टॉक में बहुत जगह पे मिलेगा, एंड इज अ कीबोर्ड स्पीकर. इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट अगर आपका स्कूल मैनेजमेंट कैन समटाइम इनवाइट हिम थ्रू ऑनलाइन ऑब्लिक वो. इज अ वेरी वोरेशियस स्पीकर एंड ही लाइक्स टू इंटरेक्ट. उसका एक न्यूज पॉडकास्ट में भी आता है एक बंदे के साथ. व्हाट इज एनडीए के टीज बताते हैं, एनडीए के टीज के ऊपर बताते हैं वो एनडीए इंडिया को छोड़ दो, वो सब छोड़ दो. वो एक न्यूज पॉडकास्टर है, उसका नाम भूल गया, यंग लड़का, उसके में भी आता, बहुत पॉपुलर लड़का भी है वो. एंड प्लीज वॉच रणवीर इलाहाबादी सर. हैं? रणवीर इलाहाबादी. रणवीर इलाहाबादी. करेक्ट. ओके, तो मैंने क्या क्या बोला यार? बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पांस वी हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. और इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को ठीक करने के लिए 5 चीजें: हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, imagination, that is your ability to see the consequences of a decision before it happens, and then do the course correction, listening to the voice of your inner conscience. The last is independent will. क्या बोला? Independent will. What does it mean? सबकी सुनो, लेकिन when you take a decision, that should be your decision. भले वो शादी का decision हो, पढ़ाई का decision हो, या corporate decision हो. You are the person with whom the buck stops. Once you take a decision and the consequences go left, right, you cannot look at your board of directors. इन्होंने किया, उन्होंने किया. You should have the moral courage to say, I have taken this decision. So if you today don't study, don't blame the management school. Don't blame your parents कि मेरे मम्मी पापा का पढ़ाई नहीं था. पुणे में पढ़ रहे हो, you have no reason to say कि मैं गांव का लड़का हूँ. That story is over. गांव के लड़के तब तक थे जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे. टुडे यू आर इन पुणे सिटी. इन JSPM कैंपस में इफ यू आर फाउंड ऑफ स्पीकिंग मराठी एंड हिंदी, by all means, but in the campus placement तब नहीं बोलना है सर मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है. That's your problem. कितना समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Can somebody tell me what are the 5 components? Self-awareness. Yeah. Learning from past experience. Learning from Imagination. Consciousness. Listening, inner consciousness. Inner conscious. And independent will. कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर एक मॉड्यूल के ऊपर हम करेंगे, so that we absolutely become crystal clear
किसी यात्रा में जाना है तो गाड़ी ठीक कर लो, पेट्रोल भर लो, विंडस्क्रीन साफ कर लो, and you should know where to go. A concentrated brain, a concentrated mind is like a laser beam. It can cut through anything. But a distracted mind is a distracted mind. It can only set goals, but can never achieve it. Yes, sir. तो आप लोग भी एक लक्ष्य के साथ आए हो. लक्ष्य को सेट करना और लक्ष्य को प्राप्त करना, they are two different things. क्या बोला मैंने? Yes, sir. To set a goal and to achieve a goal are two different things. Yes, sir. Set a goal, you can simply set a goal and sleep. But to achieve a goal, you will have to leave your bed. You will have to work hard without sleep. Which frame of mind are you? Achieve a goal. क्या बोल रहा हूँ? To set and achieve. Set and achieve a goal. If you want to achieve a goal, you should have the power to break your comfort zone. Constantly break your comfort zone. Yeah. Yes, sir. Comfort zone is a very dangerous place. It is a very comfortable place. But the problem is, once you're into it, it becomes very difficult to come out of it. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलो रे, management students. No, sir. Yes, sir. Now, what I will repeat is today, from each stages of your life, whether it is friendship, whether it is your schooling, whether it is your relationship, whether it is your parents, whether your profession, देखो what are you doing good and what are you doing bad. By applying Yes, sir. relationship. So sometime मौका मिले, we do a module called lifeline analysis. तुम्हारे पूरे life को fragments में तोड़ के we can analyze and see what is going good in your life, what is going bad in your life. We do it for your marriage counseling also. तो तुम लोगों तो marriage तो नहीं हुआ, but I'm sure you will get married. Yes. Once you're married, you have to prepare for that stage. If you go unprepared, you will make mistakes. Yes, sir. So it's whether it is marriage or whether it's profession, you have to apply this. So you know, root cause analysis में क्या होता है? What you see as the fruit are the symptoms. They are the Symptoms. इस symptoms में दवाई छिड़कने से problem solve नहीं होगा. You have to have the capacity to go to the Roots. roots. You have to fix the roots, then the fruits will come. Yes, sir. I don't know मेरे बात से क्या समझ में आ रहा तुम्हें? पढ़ो इसको. Somebody read it. Shubham. You are free to make whatever choice you want, but you are not free from the consequences of the choice. से याद रख लो भाई का. Whether it is 10th, 12th, relationship, marriage, school, studies, profession, you are free to make the choice in JSPM. Next 2 years में what you want to do, nobody can dictate. You are a postgraduate student, so आपके पीछे professors पढ़ेंगे नहीं. They will not say study. It is your job. That's your choice. Yes, sir. You want to go behind your goal or behind Pinky. That's your choice. But whatever choice you make, it will come with a Consequence. you still have no choice. You will have to have the courage to take it. Yes, sir. 2 साल के बाद रोना नहीं है भाई. Yes, sir. Everything in your life is a reflection of the choice you have made. If you want a different result, make a different choice. बता रहे सब क्या मतलब है इसका? Whatever is happening with you today is simply a reflection of that you did in the past. If your relationship is good, it is based on something you did in the past. If your academics is good, if your confidence is good, if your physical health is good, if your relationship is good, if your everything is good, it is because of the choices. Yes, sir. Similarly, if the results is not good, it will not change unless you change your choice. Change your choice. पता नहीं कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. JSPM का ये जो मिशन है, it's a wonderful mission, but इस मिशन को JSPM तभी अचीव कर पाएगा when you and JSPM work in tandem. There has to be harmony between the faculty members, the college, the faculty, and you. Only then the vision of to create a full-fledged management professional through excellent academic environment. This is an external environment. This is an external environment. There is an internal environment within you. सपना के दिमाग में क्या चल रहा, that's important. Otherwise, this external environment cannot be gainfully used by you. Yes, sir. Students with core competencies of management and equipment, all these things will only happen when you exactly understand every cause will have an effect and every effect becomes the cause for the subsequent effect. कितना वो समझ में आ रहा है? Yes, sir.
तो JSPM का इंडक्शन प्रोग्राम का फर्स्ट दिन का प्रॉबेबली मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है. My advice to you is JSPM you should not simply get a degree, MBA degree. That you will anyway get. Your aim should be to go through a total self transformation. What does it mean? Somebody read it, right? Saurabh. Yes, sir. Self transformation is not just a changing yourself from the outside. It means shifting yourself to a complete new dimension of experience and perception. दोबारा इसको मैं बता रहा हूँ. गिफ्ट रैपिंग चेंज करने से गिफ्ट की क्वालिटी नहीं बढ़ती. समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. क्या बोला बोलो? Looks doesn't affect whatever. External looks doesn't define inner personality. Absolutely. अगर suppose you are going to a friend's birthday and you get a सड़ा हुआ gift, but you beautifully wrap it, it may momentally look good, but the moment your friend क्या निकलेगा? सड़ा हुआ aloo. So tomorrow when you become management students, all of you will have degree. That's a beautiful gift wrapping. But when you go to corporate, this degree is only an entry. Rest is what you present there. That's a gift. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में समझ लेना. Your aim should not be simply to get a degree. It is to develop those skills that will act as a gift and which will be the differentiating factor between you and others. So I have finished. I hope I have taken whatever time was allotted to me. If you have any doubts, you can ask me. I have finished. 8:30 तक का time दिया था. We got 4 minutes. I will request you all of you to put your videos on. Yeah, कौन बोलेगा? I want to. या बोलो बोलो बोलो. कौन बोलेगा? शुभम, कोई भी बोलो. या बोलो भाई. MBA students इतना shy. Put your video on. अरे क्या बात है रे, इतने शर्माओगे तो कैसे होगा बात? राहुल तो एकदम गौतम बुद्धा लग रहा पेड़ के नीचे. तुम ही बोलो चलो. या राहुल एकदम तुम निर्वाणा में चला गया रे. गौतम बुद्धा लग रहा है. या बोलो, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड राहुल? गौतम बुद्धा. अरे राहुल शर्मा रहा है. Nobody is willing to give any feedback. Don't worry, it is better to make mistake and learn rather than be not doing anything and not making any mistake. That's bad. कौन बोलेगा? अरे कमाल है. What is this? क्या बोलना है सर? Feedback. क्या क्लास से क्या समझ में आया? क्या बोलना है? सर बहुत बढ़िया बताया सर आपने. जो भी बताया मतलब इतना सब कुछ मेरे बारे में मैं जानता नहीं था. आज मैं ये सब चीजें लिखूंगा अपने बारे में तो शायद मुझे पता चलेगा कि आपने जो लास्ट लाइन बोली ना कि जो एक्सटर्नल लुक है वो डिफाइन नहीं करता, इनर पर्सनैलिटी है वो डिफाइन करती है. अभी देख तू सौरभ, क्या नाम है सौरभ, अभी तो दाढ़ी उड़ी करके एकदम कोट वोट पहन के टाई पहने के you will look very good. You only change the gift wrapping. Essentially you are the same person from inside. Yes sir. या ये कौन है? somebody else बोलो. किरण. बहुत शर्माते रहे तुम लोग. JSPM के MBA स्टूडेंट्स शर्माने वाले कैसे होगा? या anybody else? Sir, it is that as you so shall you reap. means हम जैसे वर्कआउट करेंगे हमें उसका फ्रूट वैसे ही मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल ईशा, वेरी गुड है ना. तुमने वीडियो बंद करके क्यों बोला? Sir, today I am facing internet issue, sir. Electricity is low. वेरी गुड. ईशा समझ में आया तुम्हें कुछ? हाँ सर. सर हम लोग अच्छे से सीड सो करते हैं और उसे खत पानी अच्छे से डालते हैं तो फ्रूट भी अच्छा ही होगा. बिल्कुल. किसान भी तो वही करता है. किसान खेत पे करता है, आपको अपने माइंड पे करना. माइंड पे करना है. योर माइंड इज अ गार्डन. अगर किसान खेत पे काम नहीं करेगा तो वहां पे वीड्स उग जाएगा. आप अपने माइंड पे काम नहीं करोगे तो इधर वीड्स हो जाएगा. काम करो मोह अहंकार वाला. गुड ईशा. एनीबॉडी एल्स? स्नेहा.
We should avoid repetitive mistakes, Very good. not make it a habit. Very good. Anybody else? सर आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल। तो आपने पूछा था कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग का नहीं क्या, तो उसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे अभी इंडिया की टीम की फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था, उसमें इंडिया को खूब प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी सेकंड मैच में उन्होंने शायद क्रिटिकल थिंकिंग की होगी और कुछ क्रिएटिविटी लाई होगी, तो आज वो इंडिया मैच जीत रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हर हम लोग को मिलिट्री ऑपरेशन में वेदर वी सक्सीड और वेदर वी फेल, वी कैरी आउट ए केस स्टडी की क्या हुआ, व्हाट ऑल वेंट राइट, व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग। मैनेजमेंट में आपको केस स्टडी के फॉर्मेट में किया जाता है, तो दिस इज अ केस स्टडी ऑन योर ओन सेल्फ। एम इज कि 2 साल के बाद यू शुड बिकम सो कॉम्पिटेंट कि कंपनी वाले परेशान हो जाए कि जेएसएम के लड़के साले, हर लड़का इज सो कॉम्पिटेंट, सबको उठा के लेके जाना पड़े, ऐसा बनना है। चलो, if nobody else want to speak, I think I'll hand it over to Meenakshi ma'am. Dr. Meenakshi ma'am. Is Meenakshi ma'am there? Is anybody from the faculty there, ma'am? Hello? Anyone from faculty? Meenakshi ma'am? There's some गड़बड़। किसी के पास फैकल्टी का नंबर है? I'll request you one of you to please give a call। तब तक कोई दूसरा बोल सकता है। सपना, क्या समझ में आया तेरे को? सपना अग्रवाल। माइक। Meenakshi ma'am, are you there, ma'am? Yes, somebody, if you can give a call to Meenakshi ma'am. Yeah, बोलो सपना, तब तक बोलो। हाँ सर, आई हैव लर्न दैट कि जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं उन्हें सुधार कर चलना ही दैट इज लाइफ। करेक्ट। रिपीट नहीं करना चाहिए। करेक्ट, हाँ बिल्कुल। एक ही गलती को बार बार रिपीट करोगे तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना? चलो, या गुड, आई थिंक। Hello sir, it's Harshida. Yeah. Hello sir, it's Harshida. I learned from today's seminar, if you change your mindset, your thoughts, then you will become better person for your life. Very good. क्या नाम है आपका? हर्षदा कोतकर. Very good. Thank you for your feedback. God bless you. Yes, ma'am. दुगल मैम, आप finish. I've just exactly. पोएट्री में बहुत बढ़िया सेशन लिया, आइस ब्रेकिंग। इन्होंने इतनी अच्छी पोएट्री, शेर और शायरी चलो मैम, we'll wind up the session, ma'am. सर, ये बच्चे बहुत बढ़िया है। किसी दिन आपके साथ एक इंटरेक्टिव बहुत बढ़िया रहा सर। Thank you, ma'am. Any student want to say something to sir? Then I propose vote of thanks. Yeah. कोई बोलना चाहता बोल सकते हैं। Anybody? Sir, if you can share any experience from your army. अरे विद्या, आर्मी में हमारे लाइफ में इतने सारे झटके लगते हैं ना, तो there's lot to share. एक ही चीज, if I have to share one thing, I will share only one thing. Never ever give up. क्या बोला मैंने? Never give up. Never give up. Never, not one never. Never ever give up. बहुत झटके लगेंगे, बहुत टाइम ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म हो गया। नो, स्टिल। सो मेरे को आर्मी से अगर तुम्हें एक शेयर करना चाहूंगा तो यही बोलूंगा कि शरीर टूटेगा, मन टूटेगा, सब कुछ टूटेगा, बट तुम्हारा जो इच्छा शक्ति है ना, उसे कभी टूटने मत देना। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Never ever give up. This is one advice I will experience. Thank you sir. ये लोग बताएंगे कि जिंदगी तुम्हें इतना तोड़ेगा, मोड़ेगा। Thank you sir. You must have the resilience to face it. That's one advice to all of you, to boys and girls. Thank you sir. Thank you very much. Thank you sir. Ma'am, I think we continue. Shall I speak, sir? Yes, ma'am.
Hello. Yes, ma'am. Yes, Am I ma'am. audible, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. You're audible, ma'am. Hello. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा. Thank you very much, Lieutenant Colonel Ganesh Babu sir, for taking the session. The topic was the law of karma. Thanks a lot, sir, for your valuable input on communication skills. Definitely, if the students work hard at this time, they will definitely got good jobs, or you may say that they may place in a very good place. Root cause analysis you have explained very well. Cause and effect relationship you have explained very well. The journey of life you have explained very well to all the students. This was a very interactive session, and various concepts you have explained like integrity, energy, social skills, you have explained. Total self-info transformation was concept. This was the concept was very clearly you have explained. Sir, thank you very much for accepting our invitation. Thank you, And in the future period, we would like to associate with you, and physically we will call you whenever the students will start coming to the. Sure, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you, Wish ma'am. you Thank you, very ma'am. happy day. Today is the Vasant Panchami, Saraswati Pujan day. On this occasion, we have your first day of the induction session. Yesterday was the introduction Thank you, session by two faculty members, Abhijit sir as well as, and in the afternoon, Pramila madam and myself on first day of the induction, formal induction program, and on Vasant Panchami. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. And be a Thank part you. of our Thank you. God bless you all. Thank you, ma'am. I'll leave.